Hello everyone. In this video we will be discussing about the bitwise operator. Previous videos में हमने बहुत सारे ऑपरेटर्स के बारे में लर्न करा है, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे, लॉजिकल ऑपरेटर्स थे, रिलेशनल ऑपरेटर्स थे. अब इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे. सो यू कैन सी ओवर द स्क्रीन बिटवाइज ऑपरेटर्स जो हैं उनके टाइप्स देखिए. आपके पास एंड है और एंड दिस इज बेसिकली द पाइप ऑपरेटर. Yes, and this is your XOR complement, left shift and the right shift. So let me check how these operators work. But there are certain conditions before applying these operators. These operators are basically used with the int and boolean data type. If you are using it with other data types, it will give you the error. Let me check for the individual data types here. So first one is, let me apply the 4 and 5. Take another cell here. So when you do the 4 and 5, you can see the output is 4, because what is happening here, when you are taking these integer values here, the 4 is converted into the binary form, then 5 is converted into the binary form, and Python virtual machine take the individual bits of these binary forms and apply the logical end, sorry, bitwise end here. So you will be getting the output as a 4. Now we check for the 4 or 5. So when I run this code, you can see the output is 5. So you know that suppose you are having the 100 and you are having the 1015. So when you will take the OR of this, you will be getting the 101. That is a 5 output. So I hope that you all have learned these operators in your second year class and in the like in a digital system and digital electronics. So we are directly here just checking for the operations that Python virtual machines perform over these operators. So let me take one another thing. Let I do 1 XOR 5. तो इसका आउटपुट जो है आपके पास 1 आ रहा है. क्यों आ रहा है? क्योंकि XOR ऑपरेटर का वर्क है कि जब भी बिट्स डिफरेंट होती हैं आपकी, तो इट विल गिव यू द 1, अदरवाइज इट रिजल्ट्स टू द 0. तो 101 में यदि हम देखते हैं तो केवल 101 एंड 100 में यदि हम देखते हैं तो आपको 2 प्लेसेस आते हैं जहां पर आपको चेंजेस मिल रहे हैं. सो यू विल बी गेटिंग द आउटपुट एज अ 4 XOR 1. इफ आई अप्लाई दिस विद द कॉम्प्लीमेंट, तो देखिए 4 का कॉम्प्लीमेंट यदि हम निकालते हैं तो यू विल बी गेटिंग अ -5. So basically Python virtual machine use the 2's complement to represent the negative number. Now this is important. When I take the left shift operator, when I run this code, so can you see this? यदि मैं वन टाइम इस बाइनरी नंबर 4 को इनकी इसके बाइनरी फॉर्मेट में लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ वन, so all of you know that when you will shift left, use the left shift operator to shift the weight one bit position in the left side, you will be getting a twice of the integer number, so that is the 8. The vice versa with the right shift operator. So let I take 1, so the output is 2. तो लेफ्ट साइड हमें डेटा लेना है, राइट साइड हमें कितने नंबर ऑफ टाइम शिफ्ट करना है वो हम लेंगे. फॉर एग्जांपल मैं 4 पर लेफ्ट शिफ्ट 2 टाइम्स करना चाहता हूँ, so you will be getting output as a 16. So this is the use of bitwise operator with integer values. Let me try to have the use of bitwise operator with boolean values. तो जब मैं true and true करता हूँ, you can check the output is true only. When I do the true or false, the output is here true only. Similarly, you can apply all the operators with the boolean values also. This is one very important example. Let I take true and I do the left shift 2. When you run this code, so you are getting the 4. Why it is?
because a Python virtual machine we have already discussed in the Boolean variable conversions. In the Python virtual machine, true is represented as a 1. So when you shift 1 two times, you will be getting 2 multiplied by 2, that is equal to 4. So this is all about the bitwise operator. Thank you for this video.